Hello, dear children. I hope you're doing good. So, today we are here to discuss about Western dance. So, I know that you all know what is Western dance, but maybe there is a lack of clarity which I'm going to give you today. So, basically, we have 5 important Western dance forms. Okay, so one by one we are going to discuss them, and the first Western dance we are going to discuss is about hip hop dance. So hip hop dance basically ये street dance style है. ठीक है, ये जो डांस है, इन दिस डांस द मूव्स आर क्लोज टू द ग्राउंड. ठीक है, और इसमें कैसा होता है, अपने जो बॉडी को बैलेंस करते हैं हैंड एंड हेड से, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके अंदर लॉकिंग होता है, पॉपिंग होता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. इफ़ यू नो, व्हेन यू लर्न वेस्टर्न डांस यू लर्न लॉकिंग, पॉपिंग. So if there is locking and popping in that dance, that means this is a hip hop dance. That is how you can know about which dance you're learning actually. Sometimes हम सीख रहे हैं वेस्टर्न डांस से बोल के, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है कि which form of dance we are learning. So when there is locking and popping, when there is head stunts in that, when you have some stunts in that, उसको बोलते हैं hip hop dance. Okay, so let's watch a small clip of hip hop dance move. Yeah. So I think you're clear with what is hip hop dance. Now, the second important dance form, Western dance form, is break dance. अच्छा, break dance क्या है? Break dance was made famous by माइकल जैक्सन. आपने सबको देखा होगा, माइकल जैक्सन को सबने देखा होगा ना. सो द फॉर्म ऑफ डांस ही डज इज ब्रेक डांस. इसके अंदर बहुत सारे एक्रोबैटिक एंड जिम्नास्टिक स्टेप्स होते हैं. आपने देखा होगा, बहुत सारे जिम्नास्टिक स्टेप्स ब्रेक डांस में यूज़ होता है. एंड इट इंक्लूड्स ऑल्सो मून वॉकिंग, इफ़ यू हैव सीन. ओके, सो that is known as break dancing. So let us watch a small clip of break dance by Michael Jackson. Okay.
now you got an idea of what is break dance. So let's move to the next dance, and that is ballet dance. So ballet dance जो है, it was originated in Italy. Okay. और ये जो डांस है, this is based upon classical music. Western classical music. Okay. And it is done with the tip of the toes. ये डांस जो होता है इसको tip of the toes से डांस करते हैं, and it is a very graceful dance, very beautiful dance. And मेन तो है जैसा अपने इंडियन क्लासिकल डांस होता है उसी टाइप का एक क्लासिकल फॉर्म ऑफ वेस्टर्न डांस है ये. ओके, सो लेट अस वॉच अ स्मॉल क्लिप ऑफ बैलेट डांसिंग. ओके. So now you know what is ballet dancing, right? Okay. Now let us go to the next dance form, that is salsa. I think most of you must be knowing what is salsa dance. It originated in Cuba, okay? And it is the music that is played for this is from Latin American music. Okay, the music that is played is Latin American music for this. इसमें जो होता है जो बॉडी वेट है ना उसको अपने फीट से बैलेंस करते हैं बॉडी वेट को. एंड इसमें अपर पार्ट जो बॉडी का होता है वो स्टिफ रहता है, एंड द स्टीफ इतना फ्लेक्सिबल होता है. फीट से हम पूरा बॉडी वेट को बैलेंस करते हैं. सो that is the when you see that you will understand. I will show you a small clip of salsa dance also, so that you get a clear picture. If those who does not know, most of them know what is salsa dance because it is very common in here. Okay, let's watch a small clip of salsa dance. So I hope you are clear with the salsa dance. Now the next interesting and the fifth important dance form is tap dancing. Tap dancing is very interesting. Okay. Tap dancing जो होता है वो उसके शूज़ में जो होता है उसके बॉल में और उसके जो हील में मेटल प्लेट्स फिक्स किया होता है,
और एक हार्ड सरफेस में डांस किया जाता है, सो दैट साउंड इज़ हर्ड, यू नो। और वो सरफेस में वो जो भी डांसर्स हैं उसको उस तरीके से बीट करते हैं ताकि डिफरेंट साउंड आए, डिफरेंट बीट्स आए। अब ये जो टैप डांसर्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज म्यूजिशियंस, बिकॉज जिसका बीट सेंस अच्छा होता है वो ही टैप डांसिंग कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव वो बीट से वो म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल म्यूज़िक नहीं बजता है। ओके, टैप डांसिंग के लिए म्यूज़िक क्रिएट किया जाता है डांस के टाइम ही विद द शूज दे आर डांसिंग, सो दे आर टैपिंग एंड दे आर क्रिएटिंग अ म्यूजिक। सो जो टैप डांसर्स होते हैं दे आर ऑल्सो म्यूजिशियन बिकॉज दे हैव दिस परफेक्ट नॉलेज ऑफ बीट्स which they create wonderful music, okay, which people really enjoy. So it is a very interesting dance. So let us watch a small clip of tap dancing so that you get a clear idea how it is done and how interesting it is. So children, I hope you enjoyed the different clips of dances that I showed you. You can even go and check it out yourself, putting in the Google of different dance, and you can get a more clear idea about what the dance forms are. So these are the basic 5 important Western dances that you need to know. Since everybody is learning Western dance, most of them, okay, and even if you're not learning Western dance, always having a knowledge of any kind of dance is very good for your developing skills for your dance, okay. So slowly we will be learning all form of Indian dances as well. So I made this video so that my children, those who are here learning Western dance, to get a clear picture of what Western dance is, and even my children, those who are learning classical, also get a idea of what Western dance is. Okay, so you're going to go through all this and you're going to answer me next class when I ask you about various this 5 important dance forms. Okay, and I hope I'll get some more inputs from you, which I'm expecting from my children, from some inputs that I have not told here. And I know you all are very smart, and I know you will give me some wonderful inputs. Okay, so enjoy your time, keep practicing whatever I have taught you, and whatever you're learning is never a waste. Okay, understand that. So stay safe, stay home, and all the best.